Hello guys, welcome back to my channel. In today's video, I am going to show you how to download and install the Trae AI code editor step by step in our Windows system. So first open your Chrome or browser and write there in search bar Trae AI download. Then open the official website from the search result. Open the double click there and show screen record. Okay. Then once website open, you see the download button here. Choose according to your system and click the download button. I'm using Windows, so I'll do download the Windows version. सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है. तो डाउनलोड वर्जन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे. आफ्टर डाउनलोडिंग ओपन द फाइल. जैसे फाइल ओपन करना है डबल क्लिक करके. देन now open tray. On the first launch, जैसे लाइसेंस और एग्रीमेंट को आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट सेलेक्ट करना है. देन उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है. यहाँ पे पास सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट द डेस्टिनेशन लोकेशन. तो फिर नेक्स्ट करना है. जैसे सिलेक्ट द स्टार्ट मेन्यू फोल्डर. नेक्स्ट यहाँ से ऑर्डर ऐड ओपन विथ ट्रे एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोर फाइल कंटेक्स्ट मेन्यू. ऐसे आपको करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते. और क्रिएट डेस्कटॉप आइकन. आपको डेस्कटॉप पे आइकन लाना है ट्रे का, तो आप उसको क्लिक कर सकते हो. नेक्स्ट यहाँ से सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है. इट विल टेक टाइम. दैट इज द डाउनलोडिंग. Okay, now here is the downloading complete. Now finish. Okay, now open the tray. Here, close, close. And first allow the system and get started. You can choose your theme. This is the white, deep blue, black. I can choose deep blue. Here language English. Then next preference, import from VS Code. VS Code can choose according to you. For now, I'll skip. Add the command, install command. Now skip. You are ready to go. Okay. Now let me show you the AI feature. Type a prompt like create a Python calculator. Here you can select a new file. Directly you can log in. So आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा. So on a first launch, you may be need to log in. You can sign in using Google or GitHub. So simply we can sign in with GitHub. So my GitHub account is here. So you can sign in with your GitHub or Google.
So okay, here it is now. Launch